टुडे वी विल लर्न अबाउट क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स। ओके, तो आज हम सीखेंगे हमारा चैप्टर क्वेश्चन और स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ आर यू? ओके, आई सेड हाउ आर यू? In this first sentence, the first sentence asks a question. It ends with a question mark. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, मैंने आपको क्या पूछा? How are you? तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये क्वेश्चन सेंटेंस है, राइट? इसके पीछे आपने देखा लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड किया है। ओके, so it ends with a question mark. The first sentence asks the question. क्योंकि ये सेंटेंस है वो क्या हमें आस्क करता है? वो हमें क्वेश्चन आस्क करता है। ओके, इसलिए इसके पीछे यानी लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, ये हमें क्वेश्चन आस्क करता है, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? ओके, ये हमें क्वेश्चन आस्क करता है, तो इसके पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? ओके, आई ask you what is your name, यानी आपका नाम क्या है? मैंने आपको क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा ना, राइट? सो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर लास्ट में हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क की साइन है। ओके, एंड आर यू डांसिंग, यानी तुम डांस कर रहे हो? ओके, वंस अगेन दिस इज आल्सो क्वेश्चन, कि तुम डांस कर रहे हो? ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क्स। तो बच्चों, जहां पर भी हम लोग किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, तो हमें वहां पर एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, हाउ मेनी कुकीज डिड यू ईट? ओके, हाउ मेनी कुकीज डिड यू ईट, यानी तुम कितने कुकीज खाओगे? ओके, तो यहाँ पर द सेंटेंस दैट आस्क्स द क्वेश्चन ends with a question mark, यानी जो सेंटेंस हमें क्वेश्चन इंडिकेट करता है, यानी जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर एंड में हमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। ओके, यू कैन सी हियर क्वेश्चन मार्क्स। A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. Okay, तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस है, राइट, वो ऑलवेज किसी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ओके, तो सिंपल सेंटेंस है वो, और एंड में हमें क्या लगाना होता है? फुल स्टॉप, राइट, यानी ऐसा डॉट। ओके, जो भी पहले हमने बात की वो क्या था? क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, जो वो था क्वेश्चन, तो जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर बीच हमें क्वेश्चन मार्क की साइन लगानी है। अब ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। जब भी कोई सिंपल सेंटेंस होता है, राइट, तभी वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और लास्ट में हमें वहां पर फुल स्टॉप यानी डॉट हमें लगाना पड़ता है। ओके, आई एम हैप्पी। ओके, यू कैन सी ये कैसा सेंटेंस है? बिल्कुल सिंपल है। आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूँ। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर डॉट है ना, तो ये आई देखो, आई है वो क्या है? वो कैपिटल है। ओके, और वैसे भी आई है वो हमें हर बार बीच में भी आए तो आई है वो कैपिटल ही रहेगा। ओके, आई एम हैप्पी, तो आई उसके बाद हैप्पी, लेकिन हैप्पी है यहाँ पर पीछे यू कैन सी डॉट है। ओके, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, उसको हम करेंगे फुल स्टॉप। ओके, तो सेकंड सेंटेंस says something, it is a statement. Statement ends with a full stop. Okay, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेकंड सेंटेंस है, राइट, वो क्या है? वो स्टेटमेंट है, राइट, यानी सिंपल सेंटेंस, उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा स्टेटमेंट है। ओके, तो स्टेटमेंट है वो किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है। ओके, the girl is playing the piano. Okay, you can see here, यहाँ पर गर्ल है वो पियानो प्ले कर रही है। ओके, तो ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैसा हो जाएगा? कैपिटल, क्योंकि
here full stop. Okay, so the girl is playing the piano. It is our statement. Okay, it is cold. It is cold. It is also statement. Okay, because this is simple sentence. कोई question इसमें नहीं है. Okay, so here full stop is there and I is capital. तो बच्चों आई होप कि ये बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, यानी जो जिस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, तो सेंटेंस विच आस्क्स अस क्वेश्चन, उसके पीछे हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना है. और जो सेंटेंस है वो सिंपल होता है, राइट, तो उसको क्या कहेंगे हम स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमें कैपिटल करना है और एंड में हमें क्या लगाना है फुल स्टॉप. ओके, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. आपको इसकी एक्सरसाइज और ब्रेन में और टेक्स्ट बुक क्लियर राइटिंग में लिख लेनी है. ओके, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, हैव अ नाइस टाइम एंड बी सेफ. थैंक यू. This is what Robin has written. I'm Robin. My hobby is reading. I love to read storybooks. During my summer holidays, I read many storybooks like Pinocchio, The Little Mermaid, The Wishing Chair, Noddy and the Scar, and two Tintin comics. I enjoyed reading these books. Have you read any of them at the moment? I am enjoying reading a book of short stories written by Ruskin Bond. He is a wonderful author. Did you find something odd while reading this paragraph? The sentences carry a different meaning than how it is actually meant to. But before we start correcting this, we would need to clearly understand the use of punctuation marks in English writing. But what are punctuation marks and how do they help us? Punctuation marks are very important when we are writing. They show the reader where the sentences start and finish. If they are used properly, our writing becomes easy to understand. Let us learn about these punctuation marks in detail to write better. Capital letter. Usage of capital letter is an important part of punctuation in English writing. The capital letter is used in several ways while writing. The first letter of every sentence begins with the capital letter. For example, this is my bag. The children are playing. Names of specific persons or places begin with a capital letter. For example, David lives in Singapore. The Danube flows through Europe. Names of days, months and special days are written with a capital letter. For example, Saturday and Sunday are weekends. Christmas is celebrated in the month of December. The pronoun I is always capitalized. For example, I am reading a book. When the dog chased me, I ran very fast. Full stop. A full stop is used to mark the end of a simple sentence. For example, do not run down the stairs. Wash the fruit before eating it. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. Question mark. The question mark is placed at the end of the sentence that asks a question. For example, do you want to go out to play? Why are you talking so loudly? Each of these begins with a capital letter and ends with a question mark. Comma. A comma is commonly used when a brief pause is required to make the writing easier to understand. For example, the book which is kept on the table is mine. When I went to answer the doorbell, my telephone started ringing. The comma indicates a short pause or a break. The comma is used to separate a series of words in a sentence. For example, apples, peaches, plums, oranges and apricots are a few of my favorite fruits. I have a pencil, eraser, sharpener and a small ruler in my pencil box.
The comma is also used to separate words like yes, no, however, so. For example, yes, this road leads to my house. The sun was shining very brightly, so we decided to play an indoor game. Now that we know the correct use of punctuation marks in English writing, let us use them in this story. I am Robert. My hobby is reading. I love to read storybooks. During my summer holidays, I read many storybooks like Pinocchio, The Little Mermaid, The Wishing Chair, Noddy and the Scar, and two Tintin comics. I enjoy reading these books. Have you read any of them? At the moment, I am enjoying reading a book of short stories written by Ruskin Bond. He is a wonderful author. It is the use of punctuation marks that helped to make the paragraph sound so well. Recap. What have we learned today? Punctuation marks are very important when we are writing. They show the reader where the sentences start and finish. If they are used properly, our writing becomes easy to understand. Capital letter. Usage of capital letter is an important part of punctuation in English writing. A sentence starts with a capital letter. Names of specific persons or places begin with a capital letter. Names of days, months, and special days are written with a capital letter. The pronoun I is always capitalized. Full stop. A full stop is used to mark the end of a simple sentence. A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. Question mark. The question mark is placed at the end of a sentence that asks a question. The sentence starts with a capital letter and ends with a question mark. Comma. A comma is commonly used when a brief pause is required to make the writing easier to understand. The comma indicates a short pause or a break. The comma is used to separate a series of words in a sentence. The comma is also used to separate words like yes, no, however, so.